evening and good to have you with us here on the Urban Debate. Unfortunately, what we are talking about is an issue that should infuriate, outrage, and make us feel ashamed of who we have become. It is shocking, viewers, the treatment that has been meted out by the system, by this country's administration, by this country's police force, and the government to a family who's just lost their daughter. At a time when the entire country was upset about how a 19-year-old had been allegedly gang raped and brutalized in such a horrific manner, strangled, dragged, that she died because of it. At that time, when we were all asking questions about how could this have happened and why did it take so long for the police to act, you know what the police was doing? The police was trying to cover up. They forcefully took the family out of the hospital in Delhi last night, overnight took them to Hathras, back to their village, disregarded all of their appeals, all of their pleas, to wait till morning for a proper funeral as per the Hindu rituals. Disregarded their pleas to at least allow them to bring back their daughter's body once back home so that a mother can say goodbye. The police's only intention and the administration's only intent was to get rid of that body. And they set her ablaze in absence of the family, denied them even the right to have a funeral. And all of today, the administration and the police has repeatedly tried to convince the country that the family wanted the funeral, that the funeral happened as per the wishes and consent of the family with complete rituals in presence of the family. Every single word was a lie. Watch this. ना ना किसी को चेहरा नहीं दिखाया। जब आपने ये बोला कि आपने जब बोला आखिरी बार एक बार देखने दीजिए, तो उनका जवाब क्या था इसमें? उसमें आखिरी बार कहा उन्होंने हमारी तो एक भी नहीं चलने दी है। उन्होंने नहीं हमारी आनाकानी करते हुए उन्होंने अपनी मतलब मन से ही उन्हें मतलब अंतिम संस्कार कर। सर मंत्री जी से तो पूछ लेंगे कि लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सर आप ही के अंडर में हुआ ना सर, कल जब क्रिमेशन हुआ तो एक बात कर ली मंत्री जी को और भी लोग मैं सभी चैनल्स को इस बारे में कई बार बता चुका हूं। और अब सर एक बार ये बता दीजिए कि फादर अभी फ्रेश क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास कोई वीडियो या कुछ ऐसा नहीं है। मैं आपसे शेयर कर दूंगा, मैं आपसे वीडियो शेयर कर दूंगा। कर दीजिए शेयर। हाँ शेयर करवा देता हूँ सर, शेयर कर दीजिए जिसमें फादर दिख रहा हो या ब्रदर, क्योंकि आप कह रहे हैं ब्रदर दिख रहे हैं। हाँ देख मैं शेयर कर देता हूँ ना अब इसको। ठीक है सर, ठीक है। Praveen there, the district magistrate, repeatedly insisting that I was there, the police was there, the family was there, with proper rituals and consent of the family, the funeral was conducted. They then released this video and they said, look, those are the family members. Look, the family is present. They refused and they hid the fact that the pyre was set up by the police, that the fire was lit by non-family members. And when the distraught family found out that in their absence this had been done, they went running. This elderly gentleman, a grandfather, thought at least I should go and put one log, bid a final goodbye to the daughter this family has lost. With or without him, the fire had been lit, the cremation had been done. Yet, the administration didn't give up. The police force didn't give up. They continued to peddle lies. Here's the ADG. Listen to him.
देर रात तक पोस्टमार्टम के बाद से जब बॉडी पहुंची तो परिवार वालों की सहमति से और उनकी उपस्थिति में ये अंत्येष्टि कराई गई। उनकी उपस्थिति में और उनकी सहमति से कराया गया था। शांति व्यवस्था के लिए वहाँ पुलिस विद्यमान थी। दूसरा चीज़ की डेड बॉडी भी खराब हो रही थी, इसलिए घर के जो लोग थे उन लोगों ने सहमति जताई थी कि रात में ही कर दिया जाना उचित होगा। You heard him. With the consent of the family. If you still have doubts, the video that we will play for you now on your screens as I speak is the video that shows that men in uniform set up the pyre. Men in uniform set the body ablaze. There are a couple of them in plain clothes, people, not the brother, not the father, not anyone from the immediate family. Cops are doing this. One halogen lamp in the middle of nowhere because the rest of the people had been blocked behind, including the media. And in the middle of the night, this is how they tried to cover up the story. This video busts every version that the administration and the police has given us. Why? Why did they lie? Why did they rush to cremate the body? Let's say good evening to Sudhindra Bhadoria, spokesperson for the BSP, Sudhir Mishra, resident editor for Navbharat Times, Tanvi Shukla, spokesperson for BJP Uttar Pradesh, Sir Arvind Kumar Jain, former DGP of Uttar Pradesh, Vinay Tiwari, our managing editor, continues to be with me. Tara Krishna Swami will be with us in just a bit. Mr. Arvind Kumar Jain, I am just trying to understand this, sir. How can it happen when the senior most officials of the police, of the administration are present? How can each one of them lie to us on camera and say that the funeral happened as per the wishes and in presence of the family? In my opinion, action is taken when a massive law and order situation is anticipated the next day. We have also done it on 4 or 5 occasions during my service after communal riots, when we expected that if cremation will take place next day in broad daylight in presence of many people, huge problem will be created. In such cases, only police and administration resorts to it. I am not sure what was the intelligence behind it. What was the intelligence before DM and SP, and why they took this action? They will be able to explain it. SIT has been formed. SIT will go into this aspect also. But I think the only motive can be to save a massive law and order situation, because opposition parties were planning agitation next day on a very big scale by Bhim Party and AAP, Congress and others. Yes. So it might be a reason why they decided, why they took the action of cremating, of doing the rituals in the night only. No, although okay. I don't. So, Mr. Jain, let me ask you this. You are right. If there is a law and order situation, fear, okay. I just want to highlight that Chandrasekhar Azad, the Bhim Army chief who was traveling with the family, was stopped outside at the border of the district, detained. We still don't know where he is, at some undisclosed location. He is still being detained. So a part of the problem was solved right there. But even if we have to say that keeping law and order in mind, the police rushed to do this, should they have lied to us about it? Should they have repeatedly told us that no, we did it with the family, with the family's consent, in their presence? Why lie about it? I'm just expressing what I think must have been the reason, because we have also done it. I'm confessing that we have also done it on 4 or 5 occasions during my service of 37 years in UP Police. But it was only to avoid a massive flare-up, massive agitation leading to snatching of the dead body, taking out a procession with the dead body in the city, which can lead to massive riots also.
So if that is the purpose, SPDM might have got this kind of intelligence. I have not talked to them, but they might have got this kind of intelligence that tomorrow there will be massive problem, and that's why they decided to dispose off with the body. Vinay, you're vigorously shaking your head. Go ahead, please. I agree with you. I agree with you. I was just expressing my opinion as to why administration, police took this kind of decision. So I was just trying to logically think about it, that what can be the reason for this? Because otherwise, family is always allowed and family members are always present. Rituals are carried out. And it's a very shocking case. It has brought a very bad name to UP throughout the country, throughout the world, as Nirbhaya case. We are all ashamed of it. But this is my thinking. I have not talked to the SP or to other people, but this is what I think. When was the reason why they decided to do the cremation in the night only? Right. In fact, if I can just go across, to Mr. Sudhir Mishra. Mr. Sudhir Mishra, even now, after the videos have exposed the lies and the attempts to cover up, the UP government is not even looking at, bringing in some accountability for that. I am looking at the information that's come in. The assurances that the government has given to the family. There is 25 lakh rupees. There is a job for one of the brothers. There is a house that has been promised. There is a promise of a fast-track case and an SIT, which we don't know what it's going to do against its own people. There is absolutely no assurance that those who took the body away and set it ablaze will be held accountable. Mr. Sudhir Mishra, that's not even the intention here, is it? मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि सरकार, राज्य सरकार को उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ सख्ती से एक्शन लेने में कौन सी चीज रोकती है जो गलत कर रहे हैं। और मैं लगातार देख रहा हूं, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, चाहे लखीमपुर का मामला हो या दूसरी जगहों के मामले हो, ये गलतियां स्थानीय पुलिस अधिकारियों की होती हैं।
थानों की होती हैं, और वो मामले इतने बड़े बन जाते हैं कि उसमें राज्य सरकार की साख दांव पे लग जाती है। और वो इसलिए है कि नीचे के लेवल के अधिकारी लगातार झूठ बोल रहे होते हैं, लगातार संवेदनहीनता दिखा रहे होते हैं। अब इतने नाजुक मसले में एक 19 साल की बच्ची के साथ जिस तरह की मतलब उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके शरीर के साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ, उसमें पुलिस लगातार झूठ बोल रही है, मुकदमे दर्ज करने में लापरवाही कर रही है, और लगातार उनके सीनियर ऑफिशियल्स वो लगातार उनको ढांकने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों? और अगर कर रहे हैं और ये इनपुट्स सरकार तक सही रिपोर्ट्स क्यों नहीं जा रही है? कौन है जो बीच में ये सारी सूचनाओं को रोक देता है? अगर ये खबरें सही, प्रधानमंत्री को इसमें बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी फोन किया मुख्यमंत्री को, और उसके अलावा जो दिल्ली के सांसद हैं, जो दिल्ली के बीजेपी सांसद हैं, वो भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये सोचने का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अपनी ही पार्टी के शीर्ष लोग और दूसरे लोग तक हमको टोक रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, कहीं ना कहीं सूचनाओं को छुपाया जा रहा है, जो सही बातें हैं उनको दबाई जा रही हैं। और आप देखिए ना, जो हाथरस के पुलिस जो ऑफिसर्स हैं, उनकी संवेदन मतलब उनकी देखिए कितनी संवेदना ही नहीं है उनके अंदर। उनकी बातों में, चाहे वो उनके ट्वीट में वो पैसों का जिक्र कर रहे हैं कि इतने पैसे दे दिए, इतने और देने हैं, और आज देखिए वो लगातार झूठ बोल रहे हैं कि उनके फैमिली के लोग वहां पे शामिल थे। ये सारे साफ साफ वीडियो दिखाए जा रहे हैं, टीवी चैनल्स के वीडियो में साफ है कि पुलिस वाले खड़े हैं और डेड बॉडी जलाई जा रही है। तो ये क्या है? मतलब ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कहीं कुछ लोग निरंकुश हो गए हैं, खासतौर से पुलिस के अधिकारी, जिन पर कंट्रोल की जरूरत है। तो मैं यही सवाल मैं पूछना चाहती हूँ मनीष शुक्ला जी से। मनीष शुक्ला जी, दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई डिड वी हैव टू लाई अबाउट व्हाट हैपेंड इन द लास्ट 24 आवर्स? ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि जिस फैमिली ने एक बेटी खोई है, हम उन्हीं के अगेंस्ट झूठे आरोप लगाते चले आ रहे हैं? देखिए, हाथरस की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सरकार पीड़ित बेटी के साथ है, और अभी तमाम घोषणाएं आपने स्वयं बताई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। दो चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि चारों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और फास्ट ट्रैक में हम ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इधर हमारी सरकार बनने के बाद 60% दर आई है महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को सजा दिलाने के मामले में, जो पहले 20 से 25% थी। हम जो आरोपी हैं उनको सजा मिले, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, और पीड़ित परिवार को और क्या राहत दी जा सकती है उसके लिए प्रतिबद्ध है। और जो तमाम सवाल आपके हैं या समाज के हैं या विभिन्न जगहों से जो सवाल आ रहे हैं, उसके लिए 3 सदस्यीय SIT का गठन किया गया है, और ये सारे बिंदु उसके सामने होंगे। और हमको लगता है कि जब वो उसकी रिपोर्ट सामने आएगी तो निश्चित रूप से जो आरोपी हैं, जो लोग ढिलाई के दोषी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस बात के लिए आप लोग को मैं निश्चित एश्योर कर सकता हूं कि अगर ढिलाई हुई है या कहीं संवेदनहीनता बरती आपको गई अभी भी लगता है अगर ढिलाई हुई है? देखिए मैडम, मैं जब डिबेट पे हूं और जब मैं अधिकृत रूप से बात कर रहा हूं, तो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है, क्योंकि तमाम सवाल हैं, तमाम जगहों से विषय आए हैं, उन सारे बिंदुओं पे बिंदु दिए गए हैं। और जब आप डिबेट कर रहे हैं, SIT हाथरस के उस थाने पहुंच चुकी है और पूछताछ शुरू कर चुकी है, तो हमको लगता है कि थोड़ा सा मुझे एक बात बता दीजिए, क्योंकि मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ये SIT किस किस चीज विषयों पे जांच करेगी? देखिए, संपूर्ण विषय को लिया गया है। नहीं, जो उस लड़की के साथ हुआ वो क्राइम, या जो पिछले 24 घंटे में हुआ? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो शुरू में देखिए, पुलिस का ये कहना है, पुलिस का ये बयान है, और तमाम कुछ वीडियो भी सामने आए कि पहले ये आरोप लगा कि एक आरोपी संदिग्ध था जिसने गला दबा के हत्या का प्रयास किया, और 307 पे मुकदमा कायम करके उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। 8 दिन बाद ये सामने आता है कि 3 लोग और शामिल थे और रेप हुआ है, तो 3 लोग की और गिरफ्तारी की गई और रेप की धारा बढ़ाई गई। मृत्यु के पश्चात उसको कन्वर्ट किया गया 302 में। उसमें भी तमाम तरह के सवाल हैं कि नहीं पहले कहा गया था और पुलिस ने 8 दिन तक ढिलाई की। ये तमाम जो बिंदु हैं, और कल तक जो उसका अंतिम संस्कार किया गया है पीड़िता का। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना DM और SP का काम होता है, और अभी जैन साहब ने चीजों को सामने रखा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, उस टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता। हाँ, ये है कि परिवार के लोगों को उपस्थित रहना चाहिए,
पुलिस का या वहां के प्रशासन का जो बयान है, जो सामने आया है कि उसमें ब्रदर और ग्रैंडफादर वहां मौजूद थे, तो सारे बिंदु सामने है, सारे बिंदु सामने होंगे। और 3 सदस्यीय कमेटी है, उसमें एक महिला भी अधिकारी शामिल है। और आज जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करूंगा, वहां कप्तान से बातचीत हो रही है, पूछताछ हो रही है, एसआईटी पहुंच चुकी है, तो जानकारी आएगी। और एक बात मैं कहूंगा सरकार की तरफ से कि सरकार किसी को बख्शेगी नहीं अगर किसी ने ढिलाई की है, और यदि किसी के नाते से ऐसी घटना घटी और उसमें इतनी संवेदनहीनता आई है। Okay, before I go to Vinay, I know you want to make a point, but I just want to also bring in Mr. Sudhindra Bhadoria. He's been, just patiently listening to everybody. Mr. Bhadoria, do you buy this argument that's being presented to us कि जब पहले हुआ तब हमने केस दायर कर दिया, जब उन्होंने कहा गैंगरेप तब हमने वो भी फाइल कर दिया, जब उन्होंने नाम बताए हम उनको सबको अरेस्ट करके भी ले आए, जब उन्होंने कहा दूसरा अस्पताल हम उनको दूसरे अस्पताल भी ले गए, जब उन्होंने कहा अंतिम संस्कार तो हमने अंतिम संस्कार भी कर दिया। हमने तो जो है पूरी की पूरी सही तरीके से सब कार्रवाई की है इसमें। Let me speak because I think many there are from Uttar Pradesh. कहा है कि जो one minute, Manish Shukla ji, 1 minute. The question to Sudhindra Bhadoria, I'll come back. You can respond to him. आपने मुझे कोट करके कहा, इसलिए मैंने बीच में कहा जी कि मैंने कहा तो रिपोर्ट्स और जो कुछ विजुअल्स आए उसके आधार पर इस बातों को मैंने कहा है। कौन से रिपोर्ट्स और विजुअल्स? जो हम यहाँ मेरा नाव पे चला रहे हैं विजुअल, उस पे दिख रहा है पुलिस कर्मी आग लगा रहे हैं और फैमिली नहीं है। दादाजी एक आते हैं बाद में, जब उनको 2 घंटे में पता चला कि चिता को आग लगा दिया गया है और परिवार वाला कोई नहीं था। एक दादाजी गए अपनी ग्रैंड डॉटर को आखिरी बार, एक कोई तो परिवार का बुजुर्ग चला जाए चिता को कुछ वहां पे एक लकड़ी डाल के आ जाए। उस वीडियो को उठा के आपकी पुलिस ने दिन भर हमें घुमाया है और झूठ बोला है हमसे कि परिवार ने किया है अंतिम संस्कार। यह है सच मनीष शुक्ला जी, जब आपको पता चल जाए यही सच, उस दिन हम बात कर लेंगे, फिर आप आके मुझे बता दीजिएगा कि आप मानते हैं यही है सच। तो मैं अभी इस टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता। ठीक है, इसीलिए ठीक है, लेट मी गो अक्रॉस टू मिस्टर भदौरिया। आई विल कम बैक टू यू मिस्टर मनीष शुक्ला। यस मिस्टर भदौरिया। देखिए, मैं तो केवल 2 बातें कहना चाहता हूं ऐसे अवसर पर। मुझे याद है इसी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जब गुजरात में घटनाएं घटी थी तो उन्होंने ये कोई जवाब नहीं दिए थे। उन्होंने कहा था मेरा सर शर्म से झुक जाता है। मैं समझता हूं कि आज पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों का सर शर्म से झुका हुआ होना चाहिए। हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, 15 दिन तक वो तड़पती रही। उसमें अधिकांशतः वो दिन थे जो वो हाथरस के अस्पताल में थी, अलीगढ़ में थी, और मृत प्राय शरीर दिल्ली लाया गया और यहाँ पर वो मृत घोषित कर दी। उसके परिवार के साथ जो घटना घटी, जो उनके साथ जो वेदना है और उसके साथ जो दरिंदगी हुई, जो घिनौनी हरकत हुई, ये इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। जिस प्रकार से निर्भया केस दर्ज हो गया है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी। उन्होंने, जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने तमाम बातों को रेखांकित किया, हम लोगों के लिए दिशा निर्देश दिए। उसके बावजूद एक ये हाथरस की घटना नहीं है, लखीमपुर खीरी हो, बरेली हो, उत्तर प्रदेश के जिले वाइज में नाम गिना सकता हूं और गांव गिना सकता हूं। जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, ये उत्तर प्रदेश में एक ही चीज साबित कर रहा है कि कुछ समय से दबंग लोगों को, मनुवादी सामंतवादी लोगों को एकाधिकार हो गया है कि जिस प्रकार से वो जो मेरी आपत्ति है इनके शब्दों से। उनको बात अपनी खत्म करने दीजिए मनीष शुक्ला जी, मैं आपको फिर आपके पास आती हूँ। आप दोनों साथ में बात करेंगे तो दोनों की आवाज नहीं आएगी। शब्दों का प्रयोग करेंगे। शुक्ला जी कुछ तो आपको खोज रहे हैं, मुझे तो खुद आप लास्ट में राजनीति करने के लिए आ गए। मैं चाह रहा हूँ, पर आपको शर्मसार होना चाहिए। आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं। मुझे तो बात की हैरानी है कि आपको आज शर्म से डूबा हुआ होना चाहिए। आपको कुछ कहना नहीं चाहिए। आप
दिखाएंगे तो आप शायद सही रास्ते पर चल पाएंगे। जाति खोज के जो एक आप विशेष सत्ता प्रकार में के हैं, पक्षी कल का नहीं व्यवहार होंगे। आपका है, आप ये इस नहीं देश है। में एक जान लीजिए, इंदिरा गांधी हारी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हारे हैं, मोदी जी और योगी कोई वही नहीं है। आप इतना मत अहंकार कीजिए, अहंकार झुकता है, अहंकार को मत पालिए। मैं शुक्ला जी, आप अभी नौजवान हैं, मैं भी कह रहा हूँ सुरेंद्र जी, जीवन देखा है। जाति मत खोजिए, लाश पे राजनीति मत करिए, ये गिद्ध दृष्टि मत डालिए। करना चाहते हैं राजनीति, आप गिद्ध दृष्टि डाल रहे हो, आपने आप बेटी हाथ में बांट रहे हो, ये शर्म आनी चाहिए आपको। जी आपकी पार्टी की, आपकी पार्टी आपको की शर्म आनी चाहिए कि बेटी में आप जी। जाति खोज रहे हो, धर्म खोज रहे हो। एक मिनट जाना चाहिए आपकी पार्टी की। I don't want 1 minute, please. Okay, 1 minute, please. I don't want this to become a filthy political fight. It's not about politics. It's not going to become a filthy political fight. I am glad politicians are talking about it. I only hope they continue to talk about it until there is justice in this case. It is good when political parties also face and focus on the right issues. Mr. Sudhindra Bhadoria and Manish Shukla, आप दोनों की आवाज नहीं आएगी अगर आप एक दूसरे पे चिल्लाएंगे, किसी को हम नहीं सुन पाएंगे. I am requesting both of you to please take a deep breath. Just calm down for a minute. Otherwise, we will not be able to hear either one. Vinay, you wanted to make a point in between. Sure, I'm all with you on this. Yes, Vinay.
Absolutely. You're absolutely right there. And you know, this is why I listed out that, Vinay, the assurances that have been given, you know, the promises that are being made. It is good if the government truly just wants to take care of this family. But if there is an intention to get the family on their side by offering this and then not delivering complete justice and then not taking action against the administration, then it's a problem. Yes, Mr. Bhadoria, you're saying something? Yes, I just wanted to make a very brief intervention. You see, I'm not here to do politics, and there should be no politics on this issue. I was only airing a concern that this is a matter of national shame, and which I was trying to put it in certain words which may not be liked by some people. They could have retorted back and they could have given the other viewpoint. However, while agreeing with what our Nav Bharat Times person has said, the resident editor there, that you see, it is not the question of money. It is the question of dignity. It is the question of self-respect. It is this dignity and self-respect which should be available to all citizens equally, which has been done. See, there is a party which is in power which believes in a certain set of values. Hindu rituals, if you believe in, do not permit nighttime cremation, and that too without the family. This is something which has hurt the entire nation. The nation is grieved. And that is the point that I was trying to make. And that is the only submission I have to make over here. I have no politics to do. We were not there at the Safdarjung hospital. We will not go and unnecessarily during the times of Corona create chaos, as there is already enough chaos in the country. Okay, fair enough. And you know, for that clarification, may I just bring out one more part of, I have referred to this, but I want to show the video and bust this lie as well. Tanvi Shukla ji, isko dhyan se dekhiega, and to Mr. Jain and to Mr. you know, Sudhir Mishra as well. When we repeatedly asked the DM, was the family present? He kept telling us, yes, we did the cremation as per the consent of the family, in presence of the family. हम तो वहाँ देख रेख कर रहे थे. Family ने ही किया पूरे rituals के साथ. When the media started cornering him, and Parveena and Alok from our network constantly asked him his question, he said, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको video दिखाऊंगा, मेरे पास proof है, मैं video share करूँगा. And then the police put out this video. Can we just play that video for our viewers, please? He's not immediate family. He's definitely an elderly senior family member in the extended family. बुजुर्ग हैं वो, एक बड़े परिवार के जो उस नेबरहुड में रहते हैं. कुछ घंटों बाद जब उन्हें पता चला कि ये हुआ, वो वहाँ गए और पुलिस ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, ये दुनिया को बताने के लिए कि फैमिली ने फ्यूनरल किया है. We spoke to this elderly citizen. He told us the real story. Listen in. दादा, ये जो वीडियो है ये दिखाया है पुलिस ने, ठीक है, और ये वीडियो दिखा करके कह रहे हैं ये आप हो कि नहीं हो? आप ये हो तो आप ही ना. हम तो सवेरे गए. अच्छा, हाँ. तो ये क्या पुलिस क्यों ऐसा कह रही है कि ये वीडियो में आप ही जाकर के आग लगा रहे हो? आप ही के वीडियो को देख करके वो कह रही है. पुलिस क्यों ऐसा? हम पे कुमार साहब चांता की किस्म ले लो. हाँ. और गे बेटी बाटा वाले गेहूँ और बे जावा तो की अपने. मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने कोई आग वाग नहीं लगाया? हमने कोई नहीं लगाया. आपने लगाया? हमें लगामंदा ही ना है. ये पुलिस ने करवाई है जानबूझ के? पुलिस ने देखो कम से कम ना है, सुनो कम से कम ना है 25-30 आदमी है ये पुलिस वाले.
तो ऐसे करके ऐसे करके और जनी मानसन में धक्का दें तो एक छोरी को तो जी कोनी फूट गई है। ठीक है, आगे समझे? हाँ, लड़की गिर गई है और जनी मानसन में धक्का दें, जनी मान से रोहत कर रही है बेटी के काज और जे सूदे लेके भाज गई। ठीक है, फिर हमने जो एक ना जाओ हमने जो बात कह दी है अब कोई मन तो जाओ। ये वीडियो में तो आप दिख रहे हो ना? हाँ तो वीडियो में तो मेरा आमंत्रण हुए। अच्छा, हाँ तो मैं तो ढोलूंगो फिरूंगो और सवेरे ये गाय तो आपके इसी वीडियो को देख के पुलिस कह रही है कि परिवार क्या तैयारी के साथ, परिवार की पूछ से परिवार ने जब बोला है तब एक है गलत बोल रही है, हमने तो एक गलत बोल रही है। हाँ बिल्कुल बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, ये बिल्कुल बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ऐसा हमने नहीं किया है, जबरदस्ती इस बात को क्यों कहलवाना चाहते हैं? Mr. Sudhir Mishra, if I can come to you on this. We have often debated the state of policing. We have often debated the mindset of policemen in Uttar Pradesh. But I am still shocked today, Mr. Sudhir Mishra, that the police could conspire to such an extent that they saw this elderly man, took a part of this video, and then leaked it to the media to say, look, the family did it, not us. पिछले काफी समय से पुलिस सुधारों की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में और पुलिस थानों का जो हाल है और पुलिसिंग का जो हाल है वो आज से नहीं है, पिछले काफी सालों से है। मैंने भी लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था की मैंने रिपोर्टिंग की है, पुलिस की है। मैंने देखा है कि ये पुलिस का जो तौर तरीका है ये कोई नया नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही ऐसा होने लगा हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि कानून व्यवस्था सुधरेगी। अगर सुधार होता तो थानों की स्थिति ये नहीं होती। वही जातीय आग्रह है पुलिस वालों के, वही सामंती सोच है पुलिस वालों की और वही पितृसत्तात्मक सोच है पुलिस वालों की। उसमें कोई बदलाव नहीं है। आप देखिए तमाम ऐसे वीडियोस आते रहते हैं जिसमें ये लोग महिलाओं से संबंधित जितनी भी गालियां हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और लोगों को बहुत बुरी तरीके से बातचीत करते हैं। तो ये एक मानसिकता है पुलिस की जो कि जिसमें लोग थानों में जाने से डरते हैं, खासतौर से ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में। हम लोगों ने भी बहुत यहाँ पे कोशिशें की कि थानों के अंदर लोग पुलिस आम लोगों का जाना हो और काफी सुधार भी हुए, लेकिन वो शहरों तक सीमित है। गांवों में कस्बों के गांवों के जो थाने हैं, जो जिलों के दूर दराज जिलों के जो थाने हैं, उनकी हालत वाकई में खराब है। और अगर आप पुलिस के इस एक्ट की वजह से प्रशासन को देखिए और सीनियर ऑफिसर्स को देखिए तो वो खुद पैनिक में है कि वो इनको संभाले कैसे। और जो ये हरकतें हो रही हैं, चाहे वो कलेक्टर के लेवल पे हो या एसपी के लेवल पे हो या जल्दी से अंत्येष्टि करा देना हो या गलत बयानी करनी हो, वो इसी वजह से हो रही है कि इन चीजों को ढांकना मुश्किल हो रहा है सीनियर ऑफिशियल्स को। Mr. Jain, would you want to come in here and share your views? Yes, we've often spoken about police reforms, but is this something that can be fixed via that? So I have always been in favor of police reforms. Prakash Singh committee report, Supreme Court 5 judges bench order is there. It should be implemented throughout the country. There will be improvement in police functioning. But I would like to say one thing here. The announcements which have been made by Chief Minister, I would like to comment on that. This family will be requiring money to contest the case. Number 2, they will be requiring a place to stay in Hathras away from the village where they can shift family if they feel like. Number 3, a government job. A government job will help them to maintain relations with the government authorities, and it will help them. Fast track court, this is the right decision. These criminals should be booked under Gangsters Act and National Security Act also. They should be wound down. And I think permanent security should be provided to the family for at least next 10 years. Because I don't think Supreme Court will be, so many options are there for the criminals. I think they will be hanged. Sooner or later they will be hanged, but it will take at least 9-10 years. So they should be provided with permanent security also, so that they can contest the case, they can give gawahi in the court in a fearless manner. Otherwise, there will be a lot of pressure on this family from the villagers. So all these measures, they will help in fighting the case in a court of law. That's actually a very valid point there, and let me also bring in Tara Krishnaswamy, who's joining us on this conversation. Tara Krishnaswamy, from here on,
How do we ensure that justice is done now that the cover-up attempts have been demolished completely and exposed? How do we ensure that the right thing is done? I worry about that, Tanvi, because I think, I'm a great advocate of police reforms as well. But there are two aspects for any democratic system to function well. One is the structure of the system, and the second is the people in the system. I worry that we place so much importance on, students who are protesting versus a gruesome rape and a death. The kind of seriousness and immediacy that is shown for things that are far more trivial, for 56 grams of drugs versus somebody who's brutalized, and this is not a one-off case, right? This has happened, and this is not a one-off case in Uttar Pradesh. Certainly seems to have no dearth of this, but this has happened in other states as well, and this has certainly happened in Uttar Pradesh prior to this regime as well. So there are two aspects to a system that I believe is not remotely functioning at optimal capacity. Has a certain degree of rot set in there. And how do you cleanse that? Yes, reforms will help, but then there is people, and they are making conscientious choices of what to prioritize, and where humanity itself has been violated. How do you fix that? That requires, look at the case of the Madhya Pradesh policeman whose video went viral, and he has been suspended, but an FIR hasn't been filed. Even in this case, has SC/ST Atrocities Act been invoked or not? That is the first thing to invoke. So it is unclear to me that, quote, the right thing will get done. The system should be fixed because that will bring in checks and balances. But any good system is still subject to getting good, conscientious people there and allowing them to function autonomously. That piece is a big question mark, and I worry about it. Even in the Nirbhaya case, after the fact that it happened in Delhi and after all the hue and cry, just now justice was rendered. So it is an enormous time, and it's meaningless. Justice so delayed is meaningless. So the faith that women have, the message that is repeatedly sent out to the women of this country is, something like this happens, then going to the police, getting them to support you, and then getting justice from the system is nearly impossible. Even with all the in fact, Mr. Swami, I will add one more really unfortunate truth about our country, and I'm being honest here. This is including many in the media as well. If the girl was alive today, perhaps we still wouldn't be talking about it. The fact that she fought for 2 weeks while the police dragged their feet in the investigation, and it's only because she's no more. This became a story that grabbed everybody's attention, and I'm being honest about it. We knew about the story, we covered the story. Alok has been on it since September 14th. But we started asking the questions 2 days ago when she was shifted to Delhi. I am more shocked about what's happened in the last 24 hours. After this has become a nationwide story, after it has come under the scrutiny of the entire country's media, that a police force and a government believes they can still go ahead and lie on camera and try a cover-up and blame it on the family. I am more concerned about that. और मनीष शुक्ला जी, मेरा एक ही सवाल है आपसे. अब जब ये झूठ पकड़ा जा चुका है, आप आज नहीं मान रहे, शायद थोड़े दिन में जांच के बाद मान जाएंगे, लेकिन पिछले 24 घंटों में जो हुआ उसका जब झूठ आगे आ गया है, अब इस फैमिली को कैसे सुरक्षा दी जाएगी? ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तो बहुत गुस्से में रहेगा क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया. ये फैमिली नहीं रुकी, नहीं चुप बैठी, लड़ी, आवाज उठाई और ये बात बाहर आ गई है. अब आप उनको कैसे प्रोटेक्शन देंगे, कैसे न्याय देंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित के साथ है, और कोई भी कितना भी रसूख वाला हो या कितना बड़ा अधिकारी हो, सरकार की जो मंशा है उसके खिलाफ नहीं जाएगा, और जो पीड़िता है उसके परिवार की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी. और SIT की रिपोर्ट के बाद जो लोग इसमें अगर दोषी पाए गए लापरवाही के, या उसके अंतिम संस्कार में उसके परिवार के लोग नहीं रहे,
अगर इसमें कोई सच्चाई सामने आती है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एक बात लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा तन्वी जी, यद्यपि मैं इस डिबेट में संवेदनशील इशू पे मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता और मेरी आदत भी नहीं है, मैं कभी भी इस तरह की डिबेट में मैं कभी भी पॉलिटिकल बातें नहीं कहता, लेकिन जो लोग आपके चैनल पर बैठकर जाति की बात करते हैं, मीडिया में धर्म और जाति खोजते हैं, मनुवाद और तमाम बातें करते हैं, उनकी दृष्टि गिद्ध की है और जनता ये बात को समझती है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। अब एक मैडम है सोशल एक्टिविटीज बैठी है, उन्होंने उत्तर प्रदेश को बताया कि क्या क्या है, और अगर मैं जाऊं जनसंख्या की दृष्टि से तो केरल जो है उसमें सबसे आगे है अगर जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से देखा जाए। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि हम अपराध खत्म होना चाहिए, महिलाओं के प्रति अपराध खत्म होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में एक भी होता है तो वो नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि कल मैंने कम से कम, और मेरे पास वो अभी भी हैं केसेस, आपको अगर आप चाहें तो मैं भेज देती हूँ, 15 केस गिनाए थे पिछले 3 साल में, जहाँ पे 50 से 100 दिन लग गए एफआईआर फाइल करने में उत्तर प्रदेश में। एक लड़की एक औरत की कंप्लेंट पे मैं आपको ये बता दूं कि जब एक सिस्टम 50 दिन 100 दिन लगाता है ना किसी की बात मान के एफआईआर दर्ज करने में, उससे सच्चाई बाहर आ जाती है कि आप कितना भरोसा करते हैं और कितना इंटरेस्ट डालते हैं न्याय देने में। मिस्टर सुधीर मिश्रा वांट्स टू से समथिंग, गो अहेड प्लीज। यस। आज मुझे मध्य प्रदेश के नेता कैलाश विजयवर्गीय का एक व्यंग जो उन्होंने उत्तर प्रदेश पे किया वो मुझे बहुत खराब लगा, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि कैसे कोई उनके ऊपर ये व्यंग कर सकता है कि उत्तर प्रदेश में गाड़ियां बहुत पलटती हैं। मतलब न्याय की क्या यह प्रक्रिया होगी कि गाड़ी पलटेगी और मरेगा क्रिमिनल? ये जुडिशियल प्रोसेस नहीं है। जुडिशियल प्रोसेस है पुलिस तुरंत पीड़ित का बयान दर्ज करे और उस पर जल्दी से जल्दी चार्जशीट करे, और उसका जो कानूनी प्रोसेस है, जो जुडिशियल प्रोसेस है, वो जल्दी से जल्दी शुरू हो और रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर हो। ये प्रोसेस होता है और इसी प्रोसेस में सबको सजा मिलनी चाहिए, ना कि गाड़ी पलटने जैसा। वो हंस के उन्होंने बोला कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में फिर तो गाड़ियां तो पलटती ही रहती है। मतलब क्या न्याय ऐसे होगा? मतलब सुधीर मिश्रा जी, आपने इसको इस नजरिए से देखा कि ये व्यंग था शायद उत्तर प्रदेश सरकार पे? मुझे तो लगता है ये उनका संदेश था कि तुम्हें तो पता है कैसे इंस्टेंट जस्टिस देना है, कर दो। अभी आपने थोड़े दिन पहले आपने मुंबई से एक अपराधी को पकड़ा और आप लेके जा रहे थे, गाड़ी पलट गई, अपराधी मर गए और पुलिस वाले बच गए। तो ये तो आपको आता है कैसे करना है, विकास दुबे से इस केस तक। तो व्यंग भी हो सकता है, आप सही कह रहे हैं, या शायद एक संदेश भी हो सकता है कि यही कर लेते हैं आजकल, तो यही सिस्टम है हमारे देश में, न्याय 10 साल तक कौन वेट करेगा। मनीष शुक्ला वांट्स टू मेक अ पॉइंट एंड देन आई विल गो अक्रॉस टू विनय तिवारी। यस, I have a comment as well, Tanvi. मैंने डिबेट के बीच में इस बात को कहा, उत्तर प्रदेश में न्यायिक प्रक्रिया तेज हुई है। 60%, 60.3% दर है महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में सजा की जो दर है 60.3% है। पश्चिम बंगाल में 5.3 है, दिल्ली में 33 है और पंजाब में 22% है। साथ साथ और बता दें, अभी जो सोशल एक्टिविटीज है, इसके बाद आप उनको लेंगे, अभी उन्होंने तमाम तर्क दिए। देश में जो रेप केस के मामले हैं, जनसंख्या के अनुपात में उत्तर प्रदेश में 1.87 है, दिल्ली में 6.085 है, केरल में 5.89 है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है आंकड़ों में, हम नीचे हैं, हम चाहते हैं एक भी इस तरह के केस ना हो, लेकिन न्याय की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में तेज चल रही है और रेप जैसे मामलों में 4 दिन 25 दिन के अंदर केस डिसाइड हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सुधीर जी यही लखनऊ में है, रेजिडेंट एडिटर है। नहीं, मैं सहमत हूँ, लेकिन जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा वो उनकी बात अच्छी नहीं लगी, उत्तर प्रदेश का नागरिक को इसलिए भी नहीं अच्छी लगी। यस, विनय, यू वांटेड टू कम इन, गो अहेड प्लीज।
Right. Right. Vinay, you know, on a different note, when you said, मैं मानता हूँ कि शुक्ला जी बहुत सभ्य हैं और समझदार है, मुझे लगा शायद आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, पर फिर आप आगे बीजेपी प्रवक्ता के बारे में बात करने लगे. But okay, Tara Krishna Swami, last word to you before we wrap this up. The fact that, you know, the point that Vinay raised about intimidation and the fear that people have of a police system. Yeah, the fear is across India, and especially women. We are not comfortable approaching the police. So when the Uttar Pradesh police or any police make a statement disbelieving the victim, that even more sends a message that as a woman, I don't want to approach them because they won't trust me. They claim that a rape didn't happen at all at some point. The second thing that I want to say is, you know, statistics are meaningless, like the gentleman before me said, because when you're hurt and you're raped and you need justice, you're not thinking, I'm, you know, better than in some other state. That's ridiculous to say things like that. And even more startlingly, the reason that people don't complain about rape is the reason statistics are low. So in India, everywhere in India, due to the stigma attached to the rape, and due to the fear of the police and due to the fear of society, even parents will say if there is an incident, and due to the fact that most sexual harassments happen by men who know the woman, either our employers, our neighbors, or even family, many families don't even want to support the victim in terms of complaints. Right. They will hush it up. So when that is the case, most are not reported, and even more so in states like Uttar Pradesh, where there is a huge stigma attached to it, and if the system is pushing back on it. So the fact that statistics are low is not a matter of pride. The conviction rate, how fast it is solved, how fast justice is given through the system, not by randomly punishing Actually, somebody Tara, or by if I may shooting just come somebody in like here, I just want to say that the statistic that Manish Shukla was actually giving us was about a higher conviction rate when it comes to crimes against women. If you look at the number of FIRs being filed in rape cases in Uttar Pradesh, it's largely been the same. In fact, yes, it has gone up a little bit more. It did go up in the last couple of years. Then in 2019, it came down again. But the Uttar Pradesh government claims that that is because they have now started filing more FIRs. They have started responding better when there are complaints being made. Statistics aside, here is the reality of a system where a family has had to fight at every step. When they found their 19-year-old in the fields, paralyzed, tortured, assaulted, they picked her up. They started to fight to take her to a better hospital. They started to fight about arresting those who had assaulted her and brutalized her. They started to fight to take her to Delhi for better treatment. They started to fight to get the body, to find out where the dead body was. Then they fought for the right to hold a proper funeral as per their rituals. At every point they fought. For the longest time, they were either denied, suppressed, or simply brushed away. This is the reality of this case. The onus is on Uttar Pradesh's Chief Minister, Yogi Adityanath, and his SIT. Will you act against the administration and the police officials who let this Beti down? That's the question. Thank you to everybody for joining us on this conversation.